Hi guys, my name is Diya Chawla and welcome to my channel. Today in this video, I'm gonna share beginner's makeup kit which is very affordable in price. So without wasting any time, let's get started. After the skincare, which is the very important step in makeup, and the first step in makeup is using a primer. I used this one. This is Blue Heaven oil free flawless makeup base primer. दिस इज़ रियली गुड. इट्स सिलिकॉन बेस्ड. ये आपके पोर्स को भी फिल इन करता है, आपके ऑयल को भी कंट्रोल करता है. बिकॉज बिगिनर्स के साथ ना बहुत सारी दिक्कत हो जाती है कि उनकी स्किन थोड़ी सी ऑयली होती है. सो दे नीड दिस काइंड ऑफ प्राइमर एंड ये पोर फीलिंग है, सो वो भी बहुत बेस्ट काम करता है. बिकॉज उसके साथ में जो फाउंडेशन की फिनिश आती है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ एंड बिल्कुल सेम आती है. सो दिस वन एंड दिस इज़ वेरी अफोर्डेबल. दिस इज़ फॉर 300 बट इफ़ यू गेट इट ऑन सेल ये आपको 250 to 70 के आसपास का पड़ेगा. सो इट्स अंडर 300 रुपीज़. नेक्स्ट स्टेप इन मेकअप इज़ अप्लाइंग फाउंडेशन. बट फाउंडेशन भी हमें ऐसा चाहिए जो हमारी कवरेज बहुत अच्छी दे हमें और इवन टोन भी लगे, प्लस अफोर्डेबल भी हो और नॉन कोमेडोजेनिक भी हो. सो आई हैव अ वेरी गुड like recommendation for you, and this is Insight HD high coverage dewy finish foundation. It says it's dewy finish but it is not that dewy. It is bit matte or say semi matte semi dewy finish foundation, but the coverage is really very good. And आपको बस बहुत थोड़ा सा फाउंडेशन चाहिए, उसको टैप टैप करके अपने फेस पे एंड नेक पे लगाओ. ये ब्लेंड बहुत अच्छे से हो जाता है, ये स्टे बहुत लॉन्ग करता है, ये ऑक्सीडाइज बहुत कम होता है, प्लस जो कवरेज है वो दी बेस्ट है. आपके जो थोड़े बहुत डार्क स्पॉट्स होंगे या ब्लेमिशेस होंगे जो बहुत ही लाइट हैं उन्हें बहुत अच्छे से ये कवर कर लेता है. फॉर द बिगिनर्स दिस फाउंडेशन इज रियली गुड. This also retails under 300, maybe it's for 250 rupees or 255 rupees. I will mention the price on the screen. Another foundation which I recommend to use is a matte foundation. It is from Blue Heaven. I will put a picture here. That is also very good and I think that is under 350 rupees. So वो भी budget का है and for oily skin the best है. बहुत अच्छा वो भी coverage देता है and matte finish है. So yeah. Now I have two recommendations of concealer in this video, as I have so many concealers but these two are my favorites right now. The one is Swiss Beauty concealer. This is very famous concealer. ये बहुत budget friendly है, 200-250 के अंडर आता है. कवर बहुत अच्छे से करता है, इसकी कवरेज बहुत अच्छी है एंड ये ब्लेंड बहुत अच्छे से हो जाता है. एंड दिस इज हाउ इट लुक्स. Another concealer which I have is this is Faces Canada का high cover concealer. It is a new launch but I like it as this one is bit thick in formula. It covers your dark circles, your pigmentation, your blemishes really good एंड ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है. प्लस इट्स अ मैटिफाइंग कंसीलर. सो ये खुद ही सेट हो जाता है, सेल्फ सेटिंग कंसीलर है. इसके लिए आपको बार पाउडर लगाने की या इसको पाउडर से सेट करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है. अनदर थिंग विच यू नीड इन अ मेकअप किट इज़ अ पाउडर टू सेट योर कंसीलर और सेट योर फेस. दिस रिटेल्स फॉर ओनली 250 rupees and on sale it will cost you around 225, so it is under 250 rupees. And this is the powder. Why I chose this and not the loose powder is because I think it's like a loose powder in a form of pressed powder. So मैंने पहले भी I think अपने किसी हॉल में बोला है that it is a loose powder in pressed form and also it provides a little coverage on your face. So अगर आपको foundation concealer कुछ भी use नहीं करना है but still you want to control your oil and bit coverage on your face, then you can use this. Next makeup product in a makeup kit is this one. This is the contour. I have two options for you. One is powder for oily skin type and one is cream for dry skin type. And if you are combination to normal then आप इन दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो. कॉम्बिनेशन वालों को एक्चुअली मैं पाउडर वाला सजेस्ट करूँगी बिकॉज आई लाइक द पाउडर मोस्ट. एंड इज द कफ्स एंड लैशेज का contour in the shade टी केक्स. आई really like it and today I done contouring with this and this powder is very फाइन एंड बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है स्किन में. बहुत हार्श कंटोरिंग नहीं देता बट अगर आप इसको 2-4 लेयर्स लगाओगे देन ये आपको हार्श कंटोर का भी इफेक्ट दे देगा. बट इसे ब्लेंड करना बहुत ईजी है. इसका जो शेड है वो प्रॉपर सही है अगर आप मेरी स्किन टाइप के हो तो.
This retails for 250 rupees, but on sale it will cost you 225 rupees, so it is under 250 rupees. For the cream contour, I have Inside HD Concealer in the shade Rich Tan. This suits my skin as a contour, and it also very nice to blend it as a brush. So इसको apply करना भी बहुत precise है, and this is the shade. If you are not a contour person, then you definitely should have blushes in your makeup kit. So I have few options for you. This one is powder and these ones are the lip and cheek tint. So they both work really good. I applied the lip and cheek tint, and I have this Swiss Beauty ka cream and tint in the shade cinnamon and in the shade Berrylicious. These two, this is the brown one and this is the mauvish pinkish one. I applied the Berrylicious today. They blend so well and it is very easy to use. Just dip your finger and apply on your cheeks, dab and blend. They look more natural on your skin and बहुत अच्छा सा ना ग्लो भी प्रोवाइड करते हैं. सो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है यूज़ करने. And the shade cinnamon, you can use this as a contour also. These retails for 200 rupees and the quantity is really huge, so you can easily use it for a very long time. This is the shade cinnamon and this is the shade Berrylicious. Next up, I have blushes from NY Bay in very affordable category. I think these also are for 230 rupees, but on sale you will get it under 200 rupees. So they are the powder ones. It's a bit coral shade. On camera it's looking pink, but it is bit orange coral shade. They are very smooth and pigmented. आप इसको आराम से यूज कर सकते हो एंड यू कैन ऑल्सो यूज दिस एज योर आई शेडो. नेक्स्ट आई हैव दिस मूव शेड. ये बहुत ज़्यादा लाइट शेड है. सो अगर आप बहुत ज़्यादा फेयर स्किन टोन के हो या मेरे स्किन टोन के हो, देन आपको इसको थोड़ा सा ही लगाना है एंड द पिगमेंट इज़ नॉट सो वेल ऑफ दिस वन. बट जब आप इसको 2 से 4 बार अपने फेस पे पिगमेंट थोड़ा आप इसका डार्क करते हो एंड लगाते हो, देन ये आपके फेस पे बहुत ही अच्छा इफेक्ट देता है. आपके फेस पे बहुत अच्छा कलर आ जाता है. सो आई रियली लाइक यूजिंग दिस एंड दिस वन इज माई फेवरेट. Next makeup product which boosts your makeup on another level is a highlighter. I have the Swiss Beauty Fusion highlighter in the shade 04. This is a champagne shade which goes on so many skin types. It's not silver, it's not golden, it's not too loud, it's really good. It is very soft highlighter. blend बहुत अच्छे से हो जाता है. chunky particles नहीं है. and ये बहुत अच्छा natural finish भी देता है. अगर आप इसकी बहुत कम अमाउंट में इसको आप अपने फेस पे अप्लाई करोगे एंड जो ग्लो इसको यूज करने के बाद में आता है, दैट इज the best. If you do not want to buy or invest in contour, blush and highlighter separately, then you can buy a face palette like this. This is Sugar Contour de Force face palette. I'm in the shade 03 Fierce Feet. So it has 3 shades like this. One is contour, highlighter and blush, which you can use for your face and eyes as well. So ये आपके आई शेडो का भी काम बहुत अच्छे से कर लेते हैं. Plus this also blends very well on your skin. Now to set the makeup, we need a setting spray or a finishing spray to set the makeup, whether it's of powder or it's of cream product. So I have this NY Bay matte finish setting spray. It has 2 to 4 variants. This one is matte. I have a dewy finish also and a shimmer one also. This sets your makeup perfectly. It doesn't make your makeup look gray or dark anything, but मेकअप इंटैक्ट रहता है इसके साथ में. इसकी जो स्प्रे है दैट इज ऑल्सो वेरी गुड. ओनली थिंग इज इट हैज़ बिट फ्रेग्रेंस ऑफ आफ्टर शेव टाइप्स, but if you are not sensitive to fragrances, then you can use this. I have few eyeshadows, liquid eyeshadows, which starts from a very affordable price or they are under 300 rupees. So I'm starting the video with that. And I have these 2 eyeshadow. These are the glitter eyeshadows from Swiss Beauty. I have 2 shades, 02 and 06. This one is bit black metallic and this one is silver. They both work really good. अगर आप कॉन्टोर से या अपने ब्लश के साथ में थोड़ा सा अपनी आईज को डिफाइन कर लेते हो, आफ्टर दैट यूज अ शेड लाइक दिस, द ग्लिटर वन. सो ये आपकी आईज पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है. इसको आप एज अ हाईलाइटर भी यूज़ कर सकते हो, द सिल्वर एंड द गोल्डन शेड.
एंड ये ब्लेंड बहुत अच्छे से हो जाते हैं. ये काफ़ी लॉन्ग स्टे आई शेडोज हैं. नेक्स्ट अप आई हैव आई लाइनर एंड दीज टू आर द बेस्ट रिकमेंडेशन यू कैन एवर गेट. One is from the Lakme. This is the Lakme Insta Liner. This is water resistant but it is not. So अगर आप डेली वेयर में भी यूज़ करना चाहते हो या आप थोड़ी देर के लिए जस्ट 2 to 3 आवर्स के लिए यूज़ करना चाहते हो then you can use this. This is very good. The brush is very थिन और जो इसकी टिप है वो काफ़ी प्रीसाइज है, तो आप इसके साथ थिन थिक लाइनर बड़े आराम से लगा सकते हो, विंग लाइनर भी लगा सकते हो एंड दिस इज़ रियली गुड लाइनर. अनदर वन आई हैव इज़ दिस वन. दिस इज़ Blue Heaven Intense Black Eyeliner. This is my absolute favorite and this is the jet black in one swipe. The tip of this eyeliner is also very precise, so आप इसके साथ भी thin to thick लाइनर आराम से अप्लाई कर सकते हो. विंग अप्लाई हो सकता है, इनर कॉर्नर भी अप्लाई हो सकता है. प्लस दिस इज़ वेरी वेरी लॉन्ग लास्टिंग. सुबह में अप्लाई करो, रात में नहीं जाता है. वाटर प्रूफ, स्मच प्रूफ एंड ऑयल प्रूफ है, सो आराम से ये आपकी आइज पे काफ़ी ज़्यादा स्टे करता है. दिस इज़ फॉर आई थिंक ₹150 और 160 एंड द लैक्मे वन इज़ फॉर ₹120. बहुत माइनर सा डिफरेंस है बट आई विल प्रेफर कि आप ये वाला लो अगर आपका बजट थोड़ा अलाउ करता है. then this one is the best. Next up I have Kajal in the makeup kit and only one recommendation for you because this is the best Kajal I ever used. This is waterproof, smudge proof and this one is very 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 long lasting and बहुत ही smoothly apply हो जाता है. intense black है. So this one is Sugar Call of Honor Intense Kajal in the shade 01 Blackout and I really like this Kajal so much and I recommend this Kajal to everyone, like literally in my family or friends I recommend this Kajal only. This retails for ₹249 but on sale you will get it around 200 or something. Next I have two recommendations for eyebrow. These two are the eyebrow pencil and enhancer. This one is from the Blue Heaven. This is Blue Heaven True Brow Eyebrow Definer in the shade Honey Brown. So this looks like this. This is my the most favorite. This is the shade of Blue Heaven Eyebrow Enhancer. This is Honey Brown. It is very like soft and creamy but at the same time matte. The second option I have is this. This is Swiss Beauty Eyebrow Pencil in the shade Dark Brown. दिस वन इज बिट डार्कर देन द ब्लू हेवन एंड इसको आपको शार्प करना पड़ेगा और इसकी स्पूली इसके साथ में आती है. वन थिंग इज मस्ट हैव इन अ मेकअप किट इज मस्कारा. सो आई हैव 3 recommendations. दिस वन इज फ्रॉम फेसेस कैनेडा. दिस वन इज नॉट वाटर प्रूफ, सो ये आपकी जो लैशेज है उनको बहुत ज़्यादा हार्म नहीं पहुंचाएगा. ये लेंथ भी देता है, ये वॉल्यूम भी देता है आपकी आइज को एंड दिस इज द बेस्ट. And the wand is also really good. Another two mascaras are from Blue Heaven. This one is Lash Twist Curling Mascara. The wand is bit twisted. This curl your lashes. This applies equally on your lashes and lashes को बहुत अच्छा बना देता है. But I like this the most. This is Blue Heaven Extreme Length Mascara. ये लेंथ भी प्रोवाइड करता है आपकी लैशेस को, वॉल्यूम भी प्रोवाइड करता है, उनको फुलर दिखाने में भी हेल्प करता है एंड इसको अप्लाई करना दूसरे वाले से बहुत ज़्यादा इजी है. इसकी वैंड कुछ इस तरीके की है बट जो इसका फॉर्मूला है थोड़ा सा थिक है लैश कर्लिंग मस्कारा से. सो आई लाइक दिस the most. And yeah, with that I'm ending my video here. If you want me make a skincare routine for beginners in affordable category then do let me know. And if you like this video, it is helpful for you, then like this video, share it with your friends and family and subscribe to my channel.